हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू रूट्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक। हमारे पेशेंट है जिनका हमने दिसंबर आई थिंक क्रिसमस को हेयर ट्रांसप्लांट किए थे। और ये ग्रेड 6 बॉल्डनेस है, जो मेजर एरिया रहता है। दिस वाज अ ग्रेड 6 to 7 type of baldness, and we have transplanted. We have almost covered the full area, and these are his results. Results are very good. 2-3 PRPs are short. We are giving him PRP. These are the results after almost 5 to 6 months. Very natural growing pattern of the hair. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मतलब बहुत अच्छा रहा मेरा। मैंने अराउंड 25 को किया था, 25 दिसंबर लास्ट क्रिसमस को। ग्रेड 6 था मेरा। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था रिजल्ट का, मगर रिजल्ट मेरा एक्सपेक्टेशन से ही बहुत अच्छा है। सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद आपके लाइफ में क्या चेंज आया बाल आने के बाद? सर्जरी सर थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ है, मतलब जो फेस टू फेस जो रहता था कॉन्फिडेंस हुआ। और क्या बोलूँ, मतलब सब लोग एप्रिशिएशन भी बहुत कर रहे हैं रिजल्ट का अच्छा आने का। बस पीआरपी का थोड़ा है कि थोड़ा और मेरा बूस्टअप हो जाएगा। आप किसी को हेयर ट्रांसप्लांट करना है तो उसको सजेस्ट करेंगे क्लिनिक? श्योर सर, ये न्यू रूट तो बेस्ट है। मतलब मैं तो जितने भी फ्रेंड्स हैं मेरे सर्कल में जो भी हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, मैं श्योर इनको। आप खुश हो अपने रिजल्ट से? हाँ बिल्कुल, मैं खुश। कोई बोलता है ये हेयर ट्रांसप्लांट करा है या नेचुरल दिखता है? ये तो नेचुरली बोलते हैं सब लोग, बोलते हैं कि कैसे हो गया। मैंने बोला कि हो गया ट्रांसप्लांट। ओके, थैंक यू।